In this video, I will be covering the Profitability Index, which is also called the Benefit Cost Ratio, and it provides a relative measure of project's attractiveness instead of NPV, which provides an absolute value. So basically इसके अंदर आपका एक benchmark आंसर आ जाता है 1 and then आप comparison करते हो with the value of 1. If it comes greater than 1, you accept a project. If it's less than 1, you reject a project. So it standardizes your values, whereas NPV में you're dealing with absolute value. Now what is the formula? It's PI is equals to, what is the formula for this? CF1 CF2 ये क्या है? Present value of cash inflows. So present value of cash inflows, and it is being divided by CFO. CF0 क्या है? This is your initial outlay. So basically this is the profitability index formula. NPV में क्या था? It was initial outlay plus present value of inflows. So वहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बस इतना डिफरेंस है दोनों फॉर्मूलाज में. I'm going to erase this. So what is the decision rule? We'll come on to this later. ठीक है, so this is the profitability index formula. It is very similar to your net present value. वहाँ पे प्लस हो रहा होता है, यहाँ पे डिविजन में जा रहा है. Okay. So this is the same formula. Present value of inflows is this, and your initial outlay is actually represented by CF0. Moving ahead. So if we calculate it for project B, present value of inflows किस तरीके से आएगा? Using the present value formula, which is this. तो ये आप already calculate कर चुके हो in the previous part. This came 11,154 and initial investment कितनी थी? Cash flow 0 कितनी थी? 10,000. So 1.1154 is the profitability index. Similarly, if you calculate it for project A, the present value of inflows that came at that time was 11095 and 10,000 is your initial outlay, so 1.1 is your profitability index. So आपने देखा इसमें standardize कर दिया है, बस वहाँ पे आंसर क्या आया था? 1054 and 1154 and 1095 ये आपके NPVs आए थे. Now you have converted these into your profitability indexes. Okay, so moving ahead. So what is the decision rules? You will accept projects if the profitability index is greater than or equal to 1. You need to understand this कि अगर profitability index greater than 1 आ रहा है, greater than 1 का मतलब है कि numerator ज़्यादा है. So if the numerator is more, then your this will come greater than 1, which means that your NPV will be positive. You can see NPV दोनों cases में positive था, तो दोनों का answer 1 से ज़्यादा था. अगर answer let's say 0.95 या 0.8 इस तरीके से आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? NPV negative में है, because that would imply that the present value of inflows is less. And when the present value of inflows are less and the initial investment is more, तो आपका आंसर नेगेटिव में चला जाएगा. So in short, whenever the profitability index is below 1, your NPV is negative. And whenever your answer is greater than 1, which is in this case, your NPV is positive. And when your NPV is 0, your profitability index will be 1. So if this is the decision rule, okay, this was something else. So decision rule के हिसाब से अब हम decision देख लेते हैं. तो अगर independent है, I'm going to erase all of this. If it's independent, यानी कि जितने भी projects profitable हैं वो सारे accept हो सकते हैं. So in that case दोनों projects accept हो जाएंगे. So in the case of independent, both project A and B are acceptable.
But in the case of mutually exclusive, only one can be accepted. So the one with the higher value will be accepted, which is 1.1%, which is project B, right? So it's 1.11. जिसकी higher प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आएगा वो वाला चूज़ होगा, इवन दाउ दोनों 1 से ज़्यादा हैं, बिकॉज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक ही चूज़ हो सकता है. ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका 0.95 एंड 0.76 आ रहा होता, देन विच वन वुड हैव बीन एक्सेप्टेड? इफ़ इट्स इंडिपेंडेंट, दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे बिकॉज दोनों 1 से कम है. एंड इवन इफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ आंसरिंग दिस. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में चूज़ करना ही है. अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा तो भी दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे. 1 से ग्रेटर देन 1 होना कंपलसरी है. ओनली इफ इट इज़ ग्रेटर देन 1 द प्रॉफिट विल बी कंसिडर्ड, वरना वो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा. इफ इट्स 1 देन लेस देन 1 इट विल बी रिजेक्टेड. इसी तरीके से NPV भी होता है. तो अगर आपके पास एक NPV आ रहा है -100 और एक का NPV आ रहा है -50, तो ये आंसर नहीं दे देना कि -50 वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, बिकॉज वो लेस नेगेटिव है. ओके, इफ़ इट्स नेगेटिव इट विल बी रिजेक्टेड. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में भी दोनों रिजेक्ट होंगे, इंडिपेंडेंट में भी दोनों रिजेक्ट होंगे. Now, word of caution for profitability index is that if you're calculating, so assume two projects A and B are mutually exclusive and have the following cash flows. So the initial cash outflow over here is 1000 and over here it is 1200. Present value of cash flows यहाँ पे 1500 है, यहाँ पे 1750. If you calculate the profitability index, यानी कि divide कर दो दोनों को, तो ये 1.5 आ रहा है, यहाँ 1.46 आ रहा है. So according to profitability index, this one will be preferred, the one with the higher value, which is project A. But net present value के हिसाब से, जो यहाँ पे उन्होंने नेगेटिव में लिखा है, देखो जो आपका net present value का फॉर्मूला है ना, you can even write it in this way, it's the same thing. Basically आपका ये जो फॉर्मूला है ना, it's written in this way. Cash outflow, आपने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है, cash outflow 0 plus cash outflow 1 plus cash outflow n, और ये नीचे 1 plus r, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1 plus r और यहाँ पे भी 1 plus r. This is the formula that you have studied. Basically यहाँ पे है NPV is equals to initial outlay plus present value of inflows. But you can even write it this way. इस तरीके से आप इसको इसलिए लिख सकते हो बिकॉज आपकी जो इनिशियल आउटले है वो एक्चुअली में देखा जाए तो हमेशा नेगेटिव ही होगी. सो इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट दिस वे एज वेल, इट इज़ द सेम थिंग. यानी कि NPV है आपका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज को पहले ले जाओ, इनिशियल आउटले को बाद में ले जाओ, माइनस योर इनिशियल आउटले. सो इट्स द सेम थिंग. ठीक है, बेसिकली ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है, बस यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज इस तरफ है, इनिशियल आउटले इस तरफ है. सो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट दिस, यहाँ पे NPV आ रहा है 500, यहाँ पे आ रहा है 550. सो बेस्ड ऑन दिस यू विल एक्सेप्ट प्रोजेक्ट B. सो बोथ आर गिविंग यू अ डिफरेंट आंसर ओवर हेयर. सो इफ दिस इज द केस, profitability index may provide you with the incorrect ranking. You will choose the one that is given by NPV because NPV is considered to be the best criteria. So out of all of the criteria that you study, NPV gets the highest weightage. ठीक है, इसका जो आंसर होता है usually it's considered to be more final and more accurate. लेकिन बाकी measures भी आपको कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं project के बारे में, so you cannot completely ignore them. And these are your references.